Hello guys, good morning. This is Magiraj here, and now I am going to get discuss about the oscillations. So let me discuss here about the kinetic energy, potential energy, and total energy with its graphs. So let me discuss here kinetic energy, Ke in SHM. So we know that Ke is equals to 1 by 2 m v square, where v equals to omega under root a square minus y square. So Ke equals to 1 by 2 m omega under root a square minus y square whole square. So it will be equals to 1 by 2 m omega square a square minus y square. This is the kinetic energy. So its graph. This is the mean position, this is amplitude, and this is energy. So whenever displacement is 0, then when y 0, then k max होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इतनी वैल्यू आएगी. तो ये वैल्यू मान लेते हैं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है के मैक्स, और इसकी वैल्यू है 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. एंड व्हेन y इक्वल्स टू प्लस माइनस a, देन k विल बी 0. काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. तो प्लस a हो या माइनस a हो, दोनों ही सिचुएशन पर काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, यानी इस लाइन पर आ जाएगी. तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे. So this is the graph of kinetic energy. Okay. And now let me discuss here the potential energy. So potential energy in SHM. So we know that in the SHM, we know that force is directly proportional to minus y displacement. It means F equals to minus ky. K is the constant that is known as force constant. So according to this, whenever we will draw the force displacement curve, so it will be in negative. इस तरीके का है कर्व, y इक्वल्स टू x टाइप का और निगेटिव, तो ऐसा आएगा. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बाउंडेड एरिया परपेंडिकुलर होता है. सो इससे कहीं पर भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो इससे जो बाउंडेड एरिया आएगा, लेट वी कंसीडर हियर OAB, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू area of triangle OAB, and this is equals to the 1 by 2 base into altitude, y into f. So it is equals to f equals to m into alpha, and alpha is equals to omega square y. Magnitude value लेंगे, so it will be equals to m omega square y square. This will be equals to the potential energy. Okay, so the graph of potential energy this is amplitude and this is PE. So PE is equals to 1 by 2 m omega square y square. So when y is 0, then potential energy 0 means यहाँ पर है. And when y is equals to plus minus a, यानी प्लस a and माइनस a, दोनों ही केस में क्योंकि ये स्क्वायर है, तो PE की वैल्यू आ जाएगी 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वहां पर. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर थी, तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कहीं पर जाएगी. और ये इस तरीके से, तो जैसे
के का कर्व था वैसे ही पी का होगा, बट ये अपवर्ड होगा इस तरीके से. सो दिस ग्राफ विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, एंड नाउ total energy, you know that sum of kinetic and potential energy, T is equals to Ke plus Pe, and this is equals to 1 by 2 m omega square a square minus y square plus 1 by 2 m omega square y square. So it will be equals to 1 by 2 m omega square a square m omega square y square m omega square y square. So Te इक्वल टू 1 बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये वही वैल्यू है जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू थी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू प्लस माइनस ए पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू पर मिली थी वो, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी. तो अगर हम इसका कंबाइंड कर्व देखें तो ये ऐसे है, ये एम्पलीट्यूड है प्लस ए माइनस ए, and it is the fixed value 1 by 2 m omega square a square. Okay, so अभी हमने ड्रॉ किया पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऐसे था. दिस इज Pe. काइनेटिक एनर्जी का कर्व ऐसे एम्पलीट्यूड पर, ये है Ke, और ये जो कर्व है कांस्टेंट वैल्यू का, ये है T. ओके, so this is the combined curve of kinetic energy, potential energy and total energy. Okay, so in this way we can solve the combined curve. Now if we discuss here time period of a simple pendulum, time period of a simple pendulum. So let me consider this is a fixed point where this pendulum is hanging through a rope of length L, and whenever we stretch something else with some displacement like x and start the oscillation. So here if this angle theta and its weight is mg downward, so it is also equals to theta, and its horizontal component is mg cos and its vertical is mg sin, and this component try to bring this body or this pendulum at the equilibrium. Okay, so let me consider a pendulum whose mass, in which hanging a mass m, weight mg, by the rope whose length is small l by any fixed point s. So it stretches some displacement x, where the component of its weight horizontal is mg cos theta and vertical is mg sin theta. Okay, where the component of mg sin theta which tries to bring this body or this pendulum to the mean position. So this is equals to f equals to minus mg sin theta. Okay, where f equals to m alpha and sin theta in this triangle is equals to perpendicular by hypotenuse. So x by l. So by this equation, by equation first, m alpha equals to mg sin theta x by l. So m alpha equals to mg x by l. यहाँ पर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं और टाइम पीरियड कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ली है. सो अल्फा इक्वल्स टू जी एक्स बाई एल और एल बाई जी इक्वल्स टू x by alpha. Okay, so here let a pendulum whose mass is m or weight is mg hanging through a fixed point s by any rope whose length is l. It will draw a displacement x towards any one side, and
where the component of their weight mg is horizontal is mg cos theta and vertical is mg sin theta. This component mg is that component of force which try to bring this pendulum towards the mean position or equilibrium position. So f is equals to minus mg sin theta and f equals to m alpha and sin theta is equals to x by L according to this triangle. So putting all these value in equation first, and time is never be negative, so it is magnitude value m alpha equals to mg x by L. So according to this L by G equals to x by alpha, and let me take the square root in both sides. Square root in both sides. So it is equals to L by G equals to root over x by alpha, and this is equals to displacement upon acceleration, and it is equals to L by G. So according to this, under root L by G, and it is equals to T by 2 pi. So T equals to 2 pi under root L by G, where L is the length and G is the gravity, value of gravity, and according to this we can T square equals to 4 pi square L by G. So G equals to 4 pi square L by T square. In this way we will calculate the value of G. Okay, so this is the time period of a simple pendulum.